बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है 10th क्लास इंग्लिश यूनिट 1 पैराग्राफ नंबर 5 को ट्रांसलेट करेंगे। The Rasul sallallahu alaihi wasallam was so well known. The Rasul sallallahu alaihi wasallam was so well known. Rasul sallallahu alaihi wasallam was so well known, बहुत मशहूर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मशहूर थे for his justice, अपने इंसाफ के लिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए बहुत मशहूर थे। That even the Jews, कि यहाँ तक के यहूदी, that even the Jews, कि यहाँ तक के यहूदी, who were his bitter enemies, who were जो थे his आपके bitter बदतरीन enemies, दुश्मन, जो आपके बदतरीन दुश्मन थे, brought their suits, अपने मुकदमात लाते to him, आपके पास, and he decided, और आप फैसला करते केसेस मुकदमात का, केसेस का in accordance, मुताबिक with the Jewish law, यहूदी कानून के मुताबिक, यहूदी कानून के मुताबिक। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was so well known, बहुत मशहूर थे for his justice, अपने इंसाफ के लिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was so well known for his justice, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए बहुत मशहूर थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए बहुत मशहूर थे। That even the Jews, कि यहाँ तक के यहूदी, that even the Jews, कि यहाँ तक के यहूदी, that even the Jews, कि यहाँ तक के यहूदी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ में बहुत मशहूर थे कि यहाँ तक के यहूदी, who were his bitter enemies, जो आपके बदतरीन दुश्मन थे, who were his bitter enemies, जो आपके बदतरीन दुश्मन थे, who were जो थे his आपके bitter बदतरीन enemies दुश्मन, who were his bitter enemies, जो आपके बदतरीन दुश्मन थे, brought their suits, अपने मुकदमात लाते थे, brought लाते थे his suits, अपने मुकदमात to him, brought their suits, अपने मुकदमात लाते थे to him, आपके पास। कि यहाँ तक कि यहूदी जो आपके बदतरीन दुश्मन थे अपने मुकदमात आपके पास लाते थे। एंड he decided cases, और आप मुकदमात का फैसला करते थे, और आप केसेस का फैसला करते थे in accordance with the Jewish law, यहूदी कानून के मुताबिक, और आप यहूदी कानून के मुताबिक उनका फैसला करते थे, और आप यहूदी कानून के मुताबिक उनका फैसला करते थे। That even the Jews, who were his bitter enemies, कि यहाँ तक यहूदी जो आपके बदतरीन दुश्मन थे, brought their suits to him, अपने मुकदमात आपके पास लाते थे, and he decided cases in accordance with the Jewish law, और आप यहूदी कानून के मुताबिक उनका फैसला करते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए बहुत मशहूर थे कि यहाँ तक कि यहूदी जो आपके बदतरीन दुश्मन थे अपने मुकदमात आपके पास लाते थे, और आप यहूदी कानून के मुताबिक उनका फैसला करते थे। कि यहाँ तक कि यहूदी जो आपके बदतरीन दुश्मन थे अपने मुकदमात आपके पास लाते, और आप यहूदी कानून के मुताबिक उनका फैसला करते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was so well known, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मशहूर थे for his justice, अपने इंसाफ के लिए। that even the Jews, कि यहाँ तक के यहूदी, who were his bitter enemies, जो अपने बदतरीन दुश्मन थे, brought their suits to him, अपने मुकदमात आपके पास लाते थे, and he decided cases in accordance with the Jewish law, और आप यहूदी कानून के मुताबिक उनका फैसला करते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए बहुत मशहूर थे कि यहाँ तक कि यहूदी जो आपके बदतरीन दुश्मन थे अपने मुकदमात आपके पास लाते, और आप यहूदी कानून के मुताबिक उनका फैसला करते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए बहुत मशहूर थे कि यहाँ तक कि यहूदी जो आपके बदतरीन दुश्मन थे अपने मुकदमात आपके पास लाते, और आप यहूदी कानून के मुताबिक उनका फैसला करते थे। He very strictly, आप बहुत सख्ती से followed, पैरवी करते थे the commandment, हुक्म की of Allah, अल्लाह के। He very strictly followed the commandment of Allah, आप बहुत सख्ती से अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते थे। He very strictly, आप बहुत सख्ती से followed, पैरवी करते थे the commandment, हुक्म की of Allah, अल्लाह के। आप बहुत सख्ती से अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते थे, आप बहुत सख्ती से अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते थे, आप बहुत सख्ती से अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते थे, आप बहुत सख्ती से अल्लाह के हुक्म की पैरवी
کرتے تھے if they اگر وہ come to you آپ کے پاس آئیں if they come to you اگر وہ آپ کے پاس آئیں either یا تو جج فیصلہ کر دیں between them ان کے درمیان either judge between them یا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیں اور decline to interfere اور decline یا انکار کر دیں to interfere مداخلت کرنے سے یا مداخلت کرنے سے انکار کر دیں یا مداخلت کرنے سے انکار کر دیں if they come to you اگر وہ آپ کے پاس آئیں either judge between them یا ان کے درمیان فیصلہ کر دیں اور decline یا انکار کر دیں to interfere مداخلت سے یا مداخلت کرنے سے مداخلت سے انکار کر دیں اگر وہ آپ کے پاس آئیں یا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا مداخلت سے انکار کر دیں if they come to you اگر وہ آپ کے پاس آئیں either یا تو جج فیصلہ کر دیں between them ان کے درمیان اور decline یا انکار کر دیں تو interfere مداخلت سے یا مداخلت سے انکار کر دیں یا مداخلت کرنے سے انکار کر دیں اگر وہ آپ کے پاس آئیں یا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا مداخلت کرنے سے انکار کر دیں if you decline اگر آپ انکار کر دیں if you decline اگر آپ انکار کر دیں if you decline اگر آپ انکار کر دیں they cannot وہ نہیں سکتے hurt نقصان پہنچا you آپ کو in the least ذرہ برابر بھی اگر آپ انکار کر دیں تو وہ آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے if you decline اگر آپ انکار کر دیں they cannot hurt you in the least تو وہ آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر آپ انکار کر دیں تو وہ آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے if you judge اگر آپ فیصلہ کریں judge in equity جج فیصلہ کریں in equity انصاف کے ساتھ between them ان کے درمیان if you judge اگر آپ فیصلہ کریں judge in equity between them تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں اور اللہ loves those who judge in equity اور اللہ loves those who judge in equity اور اللہ loves those کیونکہ اللہ ان سے پیار کرتے ہیں وہ جج جو فیصلہ کرتے ہیں in equity انصاف کے ساتھ کیونکہ اللہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور اللہ loves those who judge in equity کیونکہ اللہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے کیونکہ اللہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو یہ تھا اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا ففتھ پیراگراف آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی نیکسٹ پیراگراف تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ